Hello everyone, this is Purohit and you are watching my YouTube channel. My dear friends, in this particular session, we are going to discuss on a theoretical concept. As you can see the title, it's all about resonance. So what actually resonance is all about when we talk with respect to chemistry, and especially when we talk about with respect to inorganic chemistry. Okay, so in the simplest terms, how I would define resonance as that we talk about a molecule or a molecular ion. Alright, we talk about what? A molecule or a molecular ion. You know what is molecule is, isn't it? Now what is the difference between a molecule and a molecular ion? जब हम molecule की बात करते हैं, we talk about combination of atoms. It can be of the same element or it can be of a different element. ठीक है, लेकिन ओवरऑल उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता. ओके, सो हम उसको क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूल. लेकिन अगर हम कॉम्बिनेशन की बात करते हैं ऑफ मोर देन वन स्पीशीज और उसके ऊपर अगर ओवरऑल चार्ज है आइदर पॉजिटिव या नेगेटिव, तो हम उसको क्या बोलेंगे? मॉलिक्यूलर आयन. तो यहां पर रेजोनेंस में दोस्तों सबसे पहली बात, हम एक सिंगल इंडिविजुअल एटम की बात नहीं करते हैं. We need to have a molecule. That means it has to be what? At least two species. Okay? So, molecule or a molecular ion which has at least कम से कम दो electronic structures. Okay, what it is? Electronic structures. That means it is related to arrangement of electrons. And when I talk about arrangement of electrons, my dear friends, so I am talking about bonds. कभी आपने सुना है कि बॉन्ड है लेकिन इलेक्ट्रॉन नहीं है? सुनना भी मत, क्योंकि ऐसा नहीं होता है. बॉन्ड है तो इलेक्ट्रॉन का होना जरूरी है. ये बात फिक्स कर दीजिए आप लोग. ऑलराइट, सो इस तरीके से हम क्या बोलेंगे कि एक मॉलिक्यूल है या मॉलिक्यूलर आयन है जिसके पास कम से कम दो इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर्स है. ऑलराइट, और जहां पर every individual structure has a contribution towards the overall properties of that particular molecule or a molecular ion. Okay, समझो एक मॉलिक्यूल के पास सब तीन स्ट्रक्चर्स हैं, तो हर एक स्ट्रक्चर का कोई ना कोई प्रकार का कंट्रीब्यूशन जरूर होता है टुवर्ड्स द प्रॉपर्टीज ऑफ दैट मॉलिक्यूल. ओके, एक पर्टिकुलर मॉलिक्यूल कंसीडर करें तो उसकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती है. ओके, एंड दोस आर बीइंग सेग्रीगेटेड एज फिजिकल प्रॉपर्टीज एज वेल एज केमिकल प्रॉपर्टीज. तो हर एक स्ट्रक्चर जो उसका होगा कोई ना कोई योगदान जरूर देगा उस मॉलिक्यूल के प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करने के लिए. Alright, so this is what I am trying to explain you in the most simplest words. Okay, that what exactly resonance is all about. कि कम से कम दो इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर होना चाहिए उसके पास, और जहां पर every individual structure is contributing towards the overall properties of that particular molecule or ion, molecular ion. Okay, now coming back to the next part is थोड़ा सा कंसेप्ट डिफिकल्ट लग रहा है, कंसेप्ट थोड़ा सा डाइजेशन में डिफिकल्ट होगा. डोंट वरी, मैं इजी कर देता हूँ. ओके, क्योंकि डाइजेशन नहीं होता है तो ऑब्वियसली उल्टी हो जाती है और यहाँ पे नहीं होना चाहिए ये. ओके, बिकॉज केमिस्ट्री इज समथिंग दैट हैज टू बी कंप्लीटली डाइजेस्टेड. ओके, एंड दैट इज व्हाट माय मोटिव इज. तो मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ. ओके, सिंपलेस्ट एग्जांपल आई गेस एवरी वन ऑफ यू ऑल विल अग्री विथ मी, एंड दैट इज अ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल. ओके, हाइड्रोजन से सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल हो ही नहीं सकता, क्योंकि हाइड्रोजन इज द वेरी फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द पीरियोडिक टेबल. हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं दोस्तों, तो हम हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं. इट्स अ डायटोमिक मॉलिक्यूल. ओके, इट्स अ मॉलिक्यूल व्हिच कंटेन्स एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट्स. और अगर एलिमेंट सेम है दोस्तों तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू भी सेम होगा. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू मींस व्हाट? इट्स द टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स इटसेल्फ. इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की ताकत. तो वो दोनों हाइड्रोजन है, तो ऑब्वियसली दोनों एटम के पास इलेक्ट्रॉन को अपनी पास खींचने की ताकत सेम है. And therefore, what I say is that the electron which are contributing towards the bond formation in a hydrogen molecule will be equidistant with respect to both the hydrogen atoms. और इस तरीके से इस बॉन्ड को क्या नाम देंगे? Oh yes, it's covalent bonding. So here we go.
So this is the covalent bonding which I am talking about. Okay, this is structure 1. Okay, so in majority of the time, okay, most of the time, the two electrons, okay, मैं आपको बता भी देता हूँ, ये डॉट है और ये क्रॉस है. Okay, so majority of the time, these are going to be equidistant with respect to the two hydrogen atoms. और अगर equidistant है, so there is no charge developed, और इसीलिए हम बोलते हैं कि ये hydrogen molecule is non-polar. Okay, नाम तो सुना होगा? Yes, polarity मतलब charges. Okay, तो यहाँ पे non-polar है because charges नहीं होता. लेकिन दोस्तों, what happens is, electrons are mobile species. You must be hearing this from a long time now. Okay, so when they are mobile species, so they have a tendency to move around. So at a particular instant of time, there is a possibility that the electrons are not going to be equidistant. They will be going more towards one of the hydrogen atoms, okay, and lesser towards the other hydrogen atom. ऐसा होता है at a particular instant of time. तो फिर क्या होगा? Suppose मैं मान के चलता हूँ कि यहाँ पर मैंने ऐसे बॉन्ड बताया and the electrons are more closer towards the right hand side of a hydrogen atom as compared to the left hand side. So it is unequal. तो फिर इस सिचुएशन में क्या होगा? यहाँ पर मैं delta negative, so it means that there is a partial negative charge developed on the right hand side hydrogen and the partial positive charge on the left hand side hydrogen atom. Okay, so this is a clear indication that this is unsymmetrical. Okay, unequal sharing of electrons. Okay, but my dear friends, this is on a particular instant of time. Majority of the time, this is what is the case is. लेकिन क्योंकि electrons are going to be mobile species, so at a one instant of time, there is going to be some deflection taking place, unequal sharing takes place. So here, the electrons are more towards the right hydrogen as compared to the left. So the right hydrogen develops a partial negative charge, and this will develop a partial positive charge, or we say polarity is developed. And this is called as an instantaneous dipole. Okay, instantaneous मतलब क्या? At a particular instant of time, not forever. कुछ पल के लिए है दोस्तों. आई बात समझ में? So यहाँ पर हम बोलेंगे इसको instantaneous dipole. दो पोल है यहाँ पर, एक पोल of negative charge, the other pole of positive charge. Okay, इसलिए pole becomes dipole. तो ये हो गया structure number 2. अब यहाँ पर दोस्तों मैंने assume किया था कि the electrons are more attracted towards the right hydrogen. It can be the other way around also because the other one is also hydrogen only. It's not some other element. तो हम दूसरा assumption करेंगे. तो वो assumption कैसे होगा? It will be this way. और यहाँ पर मैं delta minus और यहाँ पे delta plus लिखूंगा. Okay, so in this case the left hydrogen gets or develops a partial negative charge and the right hydrogen develops a partial positive charge. So this also is being called as a instantaneous dipole. Alright, so these two cases which I am talking about, that is case number 2 and case number 3, those are only at one particular instant of time. But for majority of the time, this is the structure which exists for a hydrogen molecule. But anyways, you can now check it out. It's only because of the changes in the position of the electrons that these structures are resulting, isn't it? So these are different electronic structures of the same molecule. Okay, we are talking about a molecule or a molecular ion and it has got at least two electronic structure. We are not going to change the molecule at all. ऐसा नहीं कि ये hydrogen molecule है तो ये chlorine molecule हो गया, ये fluorine molecule हो गया, नहीं. It is always a hydrogen molecule. But there is difference as far as the arrangement of the electrons is concerned. And this particular phenomenon I call it as what? Resonance. Okay, क्या बोलेंगे हम उसको? Resonance. Okay. Now, जब हम structures की बात करते हैं, which are denoted as 1, 2, and 3. So, when I talk about individual structures, so that means I make it as 1/2/3. I hope you understand this. Okay, slash मतलब और. Okay, तो ये एक या फिर दो या फिर तीसरा स्ट्रक्चर हम कंसीडर करेंगे. सो वी कॉल दिस एज अ कैनोनिकल स्ट्रक्चर. Okay, what we call it as canonical structure. So structure 1 has a contribution. It explains certain properties of hydrogen molecule. Structure number 2 explains certain properties of hydrogen molecule. Structure number 3 explains certain properties of hydrogen molecule. So every structure is contributing towards the properties of the hydrogen molecule, and therefore I call these as a canonical structure, or I also call it as a resonating structure. Okay, इसको हम क्या बोलेंगे? Resonating structure. Okay, what I call it as resonating structure.
ओके लेकिन अब थोड़ा सा चेंज इसमें करूंगा एंड दैट इज 1 + 2 + 3. If I do it like this, अभी देखो ये स्लैश को मैंने रिप्लेस किया by plus. So that means I am combining all these structures. So when I combine all the structures 1, 2 as well as 3, so then these structures together explains the entire properties of hydrogen molecule. जब मैं individual structure की बात कर रहा था तो I used the word it explains the certain properties of hydrogen molecule. But when I'm going to combine all these structures, it is going to explain the entire properties of hydrogen molecule. And that is, my dear friends, is called as resonance hybrid. Okay, it is called as what? Resonance hybrid. Hybridization, नाम तो सुनना होगा. Hybridization बहुत बड़ा definition है, लेकिन उसको सबसे पहला word अगर आप recollect करो, it's mixing, it's combination. So that's what I've done. ये combine कर दिया है मैंने. So combination of resonating structures, combination of canonical structures results in what? Resonance hybrid. So canonical structures explain certain properties of the molecule. Alright, and the resonance hybrid can explain all the properties of the given molecule which exhibits resonance. Okay, so this is, my dear friends, the introduction part of what is resonance. Please have a look at it. Okay, my dear friends, now once you have understood what exactly resonance is all about, now we go into the next part, and that is I quickly summarize the rules or the conditions for resonance. Okay, and that is condition number 1. The position of the atoms or the position of the constituent species. I basically use this word, so this is much more a better word. Position of the constituent species in the resonating structure. I just write it down as RS must be same. Okay, the position of the constituent species in all the resonating structures must be what? Same. I'll give an example, and that is, let us take an example of a hypochlorous acid. Formula is what? HOCl. And if I show it like this, HO-Cl, structure 1, and then I show HClO, structure 2. Okay, so 1 and 2 cannot be considered as a resonating structure. Got it? Okay, with this particular example, I guess you understood this very well. Once again, I repeat. I'll write down over here. The heading is what? Conditions. Okay, these are the general conditions. Of course, it varies with particular cases, but then general conditions are position of the constituent species. कॉन्स्टिट्यूएंट का मतलब क्या होता है? जिसका वो बना हुआ है, मॉलिक्यूल या मॉलिक्यूलर आयन जिसका वो बना हुआ है, उसको हम क्या बोलते हैं? कॉन्स्टिट्यूएंट स्पीशीज. ठीक है, सो द पोजीशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट स्पीशीज, जितने भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं, ओके, मॉलिक्यूल में कम से कम तो 2 होंगे, लेकिन 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं, तो जितने भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स है उनमें उनका पोजीशन सेम होना चाहिए. एंड आई गिविंग यू एग्जांपल, एंड दैट इज अबाउट हाइपोक्लोरस एसिड, HOCl. तो अगर एक स्ट्रक्चर ऐसा है कि जहां पर अरेंजमेंट इज HOCl, सेकेंड अरेंजमेंट इज HClO, तो जाहिर सी बात है दोस्तों, इट्स नॉट अकॉर्डिंग टू दिस, एंड देयरफॉर वी से 1 and 2 आर नॉट गोइंग टू बी द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर. यू गेटिंग इट? दिस इज पॉइंट नंबर 1. ऑलराइट, पॉइंट नंबर 2 इज, जब हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की बात करते हैं, दे शुड हैव सेम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स. Okay, it should have what? Same number of unpaired electrons. Okay, समझ में आ गया आपको? सम unpaired electrons मतलब क्या? सिंगल इलेक्ट्रॉन. तो अगर मेरे पास एक मॉलिक्यूल है, of course आपको मालूम है मॉलिक्यूल is going to be the same always. It will have different resonating structures. So in one of the resonating structures, suppose there are 2 unpaired electrons, then the other resonating structure also should have what? 2 unpaired electrons. एक समान सिंगल इलेक्ट्रॉन्स होना जरूरी है. अगर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चेंज हुआ तो मैं उसे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं बोल सकता. ओके, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं तो ये क्लियर हो जाएगा. ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, राइट? सो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की जब हम बात करें, सो आई एम गोइंग टू शो द अरेंजमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इन दिस वे. ओके, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, व्हेन यू टॉक अबाउट, सो इट इज डायटोमिक मॉलिक्यूल, इट्स मेड ऑफ 2 ऑक्सीजन एटम्स. ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर है 8, तो उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितना है? 6.
क्योंकि फर्स्ट शेल के 2 इलेक्ट्रॉन्स इग्नोर करना है। तो मैं एक ऑक्सीजन एटम मैंने दिखाया है यहाँ पर। आई शो दी अनदर ऑक्सीजन एटम. Okay, and to identify the electrons of the 2 different oxygen, so what I am showing is that by cross, these are the electrons of the left oxygen and the dots are electrons of the right oxygen. Alright? आप देख सकते हो ये जो स्ट्रक्चर है, दिस इज आई कॉल इट एज स्ट्रक्चर नंबर 1. आप देख सकते हो अच्छी तरीके से कि स्ट्रक्चर नंबर 1 में okay, unpaired electrons nahi hai. Okay, it is going to be 0. Now if I am going to show another structure of oxygen, that is going to be like, I have it in this way. Okay, and I have another oxygen atom which is being shown by means of dots. Now check it out. Okay, in spite of the fact that the individual oxygen atom contains 6 electrons in the valence shell, लेकिन arrangement is changing, my dear friends. Okay, ये जो structure number 2 है, okay, structure number 2, तो उसमें आप देख सकते हो कि there are going to be how many single electrons? 1 and 1, that is 2. So 2 single electrons per oxygen atom. Okay, और यहाँ पे 0 है. So the number of unpaired electrons match नहीं हो रहा है, and therefore outrightly I will say 1 and 2 are not resonating structures. Okay, 1 and 2 are not resonating structures because of the unequal number of single electrons. आई बात समझ में आप लोगों को? तो पहला पॉइंट क्या था कि the position of the constituent species in all the resonating structures must be what? Same. I do not have the flexibility to change the position of the atoms. याद रखिएगा दोस्तों, क्योंकि मैंने बहुत पहले ही बोला था कि your resonance we are talking about electronic structure. Okay, we are talking about what? Electronic structure. Okay, हम लोग यहाँ पर ये मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर की बात नहीं कर रहे. वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट अ स्ट्रक्चरल फॉर्मूला कि जहाँ पर वी कैन शो द डिफरेंस इन द अरेंजमेंट ऑफ द एटम्स. नो. ओके, इन इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर देयर विल बी ओनली चेंजेस एज फार एज द पोजीशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज कंसर्न्ड. And because the bonds are made up of electrons, so there will be changes as far as the number of bonds are concerned. That's it. उतना ही flexibility हमारे पास है. ओके, तो मैंने आपको एग्जांपल दे दिया हाइपोक्लोरस एसिड का. HOCl है और दूसरे में HClO है, नहीं चलेगा. ओके, नॉट पॉसिबल. चोकड़ी मार दिया. देखो मैंने, दे कैन नॉट बी कॉल्ड एज रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर. दूसरा पॉइंट मैंने क्या बताया था कि इन नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स भी सेम होना चाहिए. ओके, वो चेंज नहीं होना चाहिए. Alright, so as a result of this आप देख सकते हो यहाँ पर स्ट्रक्चर नंबर 1 में एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं है और इसमें आप देख सकते हो कि यहाँ पर 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है. ओके, तो उसके वजह से क्या होता है, प्रॉपर्टीज में चेंजेस आ जाएगा. ओके, मॉलिक्यूल तो सेम है. अगर मैं स्ट्रक्चर 1 कंसीडर करता हूँ और मैं बोलूंगा ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड, देयरफॉर मैं क्या बोलूंगा, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इज डायमैग्नेटिक. और यहाँ का आप देखोगे तो यहाँ पर आपको सिंगल इलेक्ट्रॉन्स दिख रहा है, तो हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इज पैरामैग्नेटिक. How it is possible, my dear friends? Same molecule cannot be diamagnetic as well as paramagnetic, ना? हम molecule change किया तो उसका magnetic property change होता है, हम मानते हैं इस बात को. लेकिन same molecule cannot be diamagnetic also and paramagnetic also. It can be any one of them under a given set of conditions. Under given set of conditions. Okay, इसलिए हमने ये second rule consider किया कि it should have a same number of unpaired electrons. Alright, so I hope यहाँ तक आपको clear हो गया. ये दोनों conditions are very clear. Please have a look at it. So my dear friends, I have explained you 2 important conditions so far, and that is the position of the constituent atoms must be the same in all the resonating structure. Point number 2 is the number of unpaired electrons in the resonating structures must be same. Okay, now we go into the next part, and that is unlike charges must reside on adjacent constituent species. And similarly, we can also say like charges must not reside on adjacent constituent species. Now what is the meaning of this? I'll explain you this very simple words. Let us assume a molecule ABC. ऐसा कोई molecule नहीं होता, आप भी जानते हो. ओके, सिंबल ए वाला कोई एलिमेंट ही नहीं है इन द फर्स्ट प्लेस. हाँ, बी है बोरॉन, सी एन कार्बन, लेकिन ए वाला तो कोई है ही नहीं. ओके, लेकिन जस्ट
लेट अस टेक फॉर एग्जांपल वी हैव ABC और इसका मैं अभी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बताता हूं. ओके, वन स्ट्रक्चर इज दिस. मैं यहाँ पे लेबलिंग भी कर दूंगा, सो इट बिकम्स इजियर फॉर यू टू अंडरस्टैंड. सेकेंड स्ट्रक्चर, the third structure. Okay, so these are the possible three structures I am giving you. Okay, there are many also. Let us consider this. So, पहले तो consider a hypothetical molecule that is ABC. Now there are charges going to be there. अभी यहाँ पे क्या बोला है? Unlike charges must reside on the adjacent constituent species. Unlike मतलब क्या? Simple words में opposite charges. They should be present on the adjacent constituent species. Adjacent मतलब क्या? बाजू बाजू. ओके, तो बाजू बाजू वाले स्पीशीज के बीच में अगर ऑपोजिट चार्जेस है तो क्या होगा? प्यार होगा दोस्तों. और प्यार होगा तो स्थिरता आती है, ये आप जानते हो अच्छे तरीके से. ओके, कभी ना कभी आपने प्यार जरूर किया होगा किसी ना किसी से, ठीक है ना. सो सेम थिंग इज हैपनिंग ओवर हियर आल्सो इन केमिस्ट्री. सो व्हेन द adjacent atoms are having opposite charges, it results in force of attraction, it results in stability. ओके, बिकॉज रेजोनेंस इज रिलेटेड टू स्टेबिलिटी. मैं आऊंगा उस बात पे भी, ठीक है. सो उसका दूसरा मतलब ये निकलता है, हर एक स्टेटमेंट के दो मतलब निकलते हैं, तो दूसरा मतलब ये निकलता है कि लाइक चार्जेस मतलब सेम चार्जेस मस्ट नॉट रिसाइड इन द एडजेसेंट कॉन्स्टिट्यूएंट स्पीशीज. बाजू बाजू वाले एटम्स के पास अगर सेम चार्ज है तो सेम चार्ज है तो रिपल्शन है, मारा मारी है, नहीं चाहिए हमें ये. ओके, प्यार मोहब्बत दोस्ती की बात करते हैं हम केमिस्ट्री में हमेशा. ऑलराइट, सो आप देखो यहाँ पर स्ट्रक्चर नंबर 1, कहीं पर भी देखो एचएसएन एटम्स में कोई भी सेम चार्जेस नहीं है. ए एंड बी एंड बी एंड सी, ए और सी नहीं देखना है दोस्तों, क्योंकि ए और सी बाजू बाजू में नहीं है, बीच में बी है. ओके, तो उसके वजह से क्या हो रहा है, यहाँ पे देयर इज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. सिमिलरली यहाँ पर भी सेम थिंग है. ओके, ए और सी नहीं देखना बिकॉज इन बिटवीन देयर इज बी एंड देयर इज गोइंग टू बी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. हाँ, बट यहाँ पर देखो दोस्तों, यस थोड़ा गड़बड़ दिख रहा है ना आपको. यस, ए और बी तो ठीक है, चलो प्यार मोहब्बत है, लेकिन बी और सी में नफरत है. ओके, सो ये नहीं चलेगा हमें. So structure 1 and structure 2 will contribute more, okay, towards the resonating structure. Structure number 3, its contribution is very less towards the actual structure. Okay, this is what is the meaning. Okay, like charges should not be residing on the adjacent atoms. मतलब यहाँ पे देखो सेम चार्जेस है बाजू बाजू वाले में, तो नहीं चलेगा. Opposite charges या unlike charges should reside on the adjacent constituent species. ठीक है. So structure 1 and structure 2 according to this particular condition is going to contribute more towards the actual structure, and structure number 3 is contributing very very less towards the actual structure. Alright, तो ये था about the next rule. Okay, एक और बात नेक्स्ट रूल में जाएंगे इसके बाद वाला रूल में, और वो ये है कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में, इन द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर द नेगेटिव चार्ज resides on the more electronegative element. Okay, it resides what? On the more electronegative element. मैं आपको एग्जांपल देता हूँ HF. मैं आपको बताना चाहता हूँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी I just write down as E है, तो उसमें कोई दोहराई नहीं है इसमें कि फ्लोरीन is having a higher electronegativity. In the entire periodic table, फ्लोरीन का electronegativity is highest. ये आपने कई बार सुना होगा और अभी भी आप मेरी जुबान से सुन रहे हो. Alright? So, fluorine is more electronegative as compared to that of what? Hydrogen. So, इस रूल के हिसाब से fluorine should have a partial negative charge and hydrogen should have a partial positive charge. This is a structure 1. And if I am having a structure like this, partial positive and partial negative, this is a structure number 2. So its contribution is negligible towards the actual structure. Yes, ये सही है. Okay, यहाँ पे the negative charge is developed on fluorine, which is more electronegative as compared to that of hydrogen. So this structure obviously is contributing greater, okay, manifold, काफी हद तक वो एक्चुअल स्ट्रक्चर को कंट्रीब्यूट करेगा, और इसका जो कंट्रीब्यूशन है इट्स गोइंग टू बी वेरी वेरी लेस. ओके, आई वोंट से जीरो बिकॉज दोस्तों फिर क्या हो जाता है कि कंट्रोवर्सी क्रिएट हो जाता है. सो टू बी अवे फ्रॉम कंट्रोवर्सीज वी जस्ट यूज अ सिंपल वर्ड एंड दैट इज व्हाट? लेस.
ओके, इसका कंट्रीब्यूशन इज लेस। अभी लेस बोलेगा तो वो जीरो भी हो सकता है और नॉन जीरो भी हो सकता है। ओके, लेकिन एक बात तय है, काफी कम उसका कंट्रीब्यूशन है, लेकिन यहाँ पे इसका कंट्रीब्यूशन काफी ज्यादा है on the basis of this particular rule. I hope you all are getting very well with respect to the rules which are being discussed with respect to resonance. Next particular rule is that we are going to consider, and that is the resonating structure or the canonical structure should have more number of bonds. Okay, ज़्यादा number of bonds होने चाहिए, क्योंकि bonds are nothing but सिंपल वर्ड्स, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो जितना ज्यादा बॉन्ड्स होगा उतना ज्यादा अट्रैक्शन होगा और उतना ज्यादा स्टेबिलिटी होगा। ओके दोस्तों, आपको मालूम है केमिस्ट्री में वी गिव प्रायोरिटी टुवर्ड्स व्हाट? स्टेबिलिटी। ऑलराइट, सो आई गिव यू सिंपल एग्जांपल अबाउट Bf3, और इस पर्टिकुलर कंडीशन से मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं कि कैसे एक पर्टिकुलर कंडीशन किसी दूसरे कंडीशन पे हावी हो जाता है, कैसे वो डोमिनेट करता है, हाउ अ पर्टिकुलर कंडीशन डोमिनेट्स द अदर कंडीशन। आई गिव एन एग्जांपल थ्रू दिस पर्टिकुलर एग्जांपल, एंड दैट इज Bf3 Boron Trifluoride. Okay, now when you talk about boron trifluoride, the first structure is this. Okay, Bf3, simple. Okay, structure number 1. Now the other possibilities that I have is this is structure number 2. और मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूं कि दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के बीच में ये डबल हेडेड एरो दिखाना है। ऑलराइट, and that is why because the structures are interconvertible merely by bringing about change in the arrangement of the electrons. Okay, so one can be converted into two can be converted into one. Okay, so एक structure मिला, we go for another structure, and that is this is structure number 3. We go for another structure. अब देखिए दोस्तों, what happens over here is this is structure number 4. चारों स्ट्रक्चर को गौर से देखिएगा आप। ओके, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दिस पर्टिकुलर रूल, क्या रूल बोला है कि इट शुड हैव मोर नंबर ऑफ बॉन्ड्स। ओके, सो दैट मोर द नंबर ऑफ बॉन्ड्स मोर बेटर द स्टेबिलिटी इज। तो इस रूल के हिसाब से और इस कंडीशन के हिसाब से स्ट्रक्चर नंबर 2, स्ट्रक्चर नंबर 3 एंड स्ट्रक्चर नंबर 4 का कंट्रीब्यूशन इज टुवर्ड्स टुवर्ड्स अ ग्रेटर एक्सटेंट। कंट्रीब्यूशन इज ग्रेटर इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट, सुन लीजिए अच्छी तरीके से, गौर से कान खोल के सुन लीजिए कि इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट के जो पॉजिटिव चार्ज है वो फ्लोरीन के ऊपर है, यानी वो ये जो कंडीशन है इसका प्रीवियस कंडीशन से वो अकॉर्डिंग नहीं है, वो मैच नहीं हो रहा है। लेकिन फिर भी मैं आपको बताना चाहता हूं कि स्ट्रक्चर नंबर 2, 3 और 4 ज्यादा कंट्रीब्यूट करेगा टू द ओवरऑल स्ट्रक्चर ऑफ Bf3। ओके, द रीजन इज यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूटरी फैक्टर, द डिसाइसिव फैक्टर इज द नंबर ऑफ बॉन्ड्स। वो जो डबल बॉन्ड कैरेक्टर डेवलप हुआ है दोस्तों, उसके वजह से इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि फ्लोरीन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, एक्चुअली उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होना चाहिए, लेकिन इन स्पाइट ऑफ दैट फैक्ट, ओके, वी से that structure 2, 3 and 4 contributes more towards the actual structure. Alright, so this is the rule. Last rule we come for, and that is whenever we talk about resonance, okay, and the resonating structures, the difference in the energies must be less. ओके, ये आपको याद रखना। ओके, अब जैसे कि ये यहाँ पे एग्जांपल देता हूँ Bf3 मॉलिक्यूल, 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है उसके पास, कितना है? 4। ओके, अब ये चारों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में अगर हम उनका एनर्जी कंसीडर करें तो एनर्जी डिफरेंस हैज टू बी व्हाट? लेस। ओके, सो दैट इज टू बी क्लियर। सो दैट मींस व्हाट हैपेंस इज, एनर्जी को हम स्टेबिलिटी के साथ रिलेट करते हैं, तो इफ द एनर्जी वैल्यूज आर वेरी क्लोज है ना, तो ये तो बोलेंगे द डिफरेंस इज लेस। So if the energy values of the resonating structures are close enough, so we say that stability is almost close. I don't say it's same.
नहीं, ऐसा नहीं बोलूंगा मैं. ओके, ये जितने भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स है उसमें से हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि सम ऑफ देम आर गोइंग टू बी द मोस्ट स्टेबल, द अदर वन इज गोइंग टू बी द लीस्ट स्टेबल, बट the difference in energy should be what? Less, so that the stability level is almost the same. All right, so this is the last particular condition for resonance. Okay, so I hope you have understood this very well. All right, my dear friends, in continuation to the last condition, and that was about energy, मैं आपको एक और कंसेप्ट एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ और उसे हम लोग बोलते हैं रेजोनेटिंग एनर्जी. उसका फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूँ. रेजोनेटिंग एनर्जी का formula is the energy of the actual structure minus the energy of the most stable resonating structure. Okay, this is what resonance energy is. मैंने आपको जैसे बोला था कि the resonating structures have energy which is very close to each other, not exactly same but close to each other. तो थोड़ा बहुत डिफरेंस रहेगा, स्मॉल डिफरेंस. तो उस डिफरेंस के आधार पर वी विल बी गिविंग और लेबलिंग वन ऑफ द स्ट्रक्चर एज द मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर. तो उसका एनर्जी एंड द एनर्जी ऑफ द एक्चुअल स्ट्रक्चर, वो दोनों का डिफरेंस निकालेंगे और वो जो डिफरेंस मुझे मिलेगा दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? द रेजोनेटिंग एनर्जी. ओके, व्हाट इज इट कॉल्ड एज? रेजोनेटिंग एनर्जी. अब यहाँ पे दोस्तों मैं इंपॉर्टेंट बात ये आपको बताना चाहता हूँ कि ये देखो आप, डिफरेंस है. Okay? It's a difference. और आप अच्छी तरह से जानते हो दोस्तों, and that is कि difference जुड़ा हुआ है with the lowering of the values. Okay? जब भी दो नंबर्स को आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको जो आंसर मिलेगा that is going to be always less. Okay? जब समेशन करेंगे तो it is associated with increase in the values. Difference is related to decrease in the values. I hope you know this very well. Okay? तो इस तरीके से हम क्या बोलेंगे अभी? यहाँ पे जो हम लोग वैल्यूज की बात कर रहे हैं वो कौन से वैल्यूज की बात कर रहे हैं? एनर्जी के वैल्यूज की. Okay, we are talking about what? The values of energy. So when I talk about resonance energy, in simple words, I would like to make you understand that resonance energy is associated with lowering of energy. We are talking about energy over here, my dear friends. And why I'm using the word lowering? Because I used over here difference. It's not the addition, my dear friends. It's not the summation. Okay, so it's the lowering of the energy. That is what resonance energy is all about. Okay, and the next thing which we can say is, yes, my dear friends, I hope you understand what am I talking about. Energy कम हुआ तो क्या होगा? Stability. Come on, बताइए please. ये देखो मेरे हाथ देख रहे हैं आप लोग को? Yes, you had it right. Increase in stability होता है. All right. So resonance energy is related to the lowering of energy, which results in an increase in stability. It's as simple as that, my dear friends. ओके, ये आपको पूरा कनेक्शन समझ में आ गया होगा. यानी रेजोनेंस एनर्जी एंड स्टेबिलिटी आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. जितना रेजोनेंस एनर्जी ज्यादा होगा उतना स्टेबिलिटी ज्यादा होगा. जितना रेजोनेंस एनर्जी ज्यादा होगा उतना लोअरिंग ऑफ एनर्जी ज्यादा होगा. ओके, एंड देयरफॉर वी से दैट यस, इट इज कंट्रीब्यूटिंग टुवर्ड्स व्हाट? स्टेबिलिटी. अब एक और बात बताना चाहता हूँ, रेजोनेंस एनर्जी का डायरेक्ट रिश्ता रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स के साथ भी है. ओके, सो ये पूरा चक्कर देखो कैसा है. ओके, कनेक्ट करो एक दूसरे के साथ. कनेक्शन बहुत जरूरी है दोस्तों. ओके, इंसानों में भी, और अगर वो समझ में आ गया तो केमिस्ट्री भी आसानी से समझ में आ जाएगा आपको. ओके, एंड दैट इज रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स रेजोनेंस एनर्जी के साथ जुड़ा हुआ. So greater the number of resonating structures, obviously what will happen is greater will be the number of, or greater will be the value of resonance energy. Okay, because it results in dissipation of energy. Dissipation मतलब क्या? Distribution of energy. और जितना ज्यादा कोई भी चीज डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, जितना ज्यादा आप फैलाओगे तो उतना वैल्यू कम होगा, प्यार को छोड़ के. ओके, जितना प्यार आप शेयर करोगे उतना बढ़ता है. लेकिन यहाँ पर तो हम बात कर रहे हैं अबाउट एनर्जी, तो यहाँ पे डिसिपेशन ऑफ एनर्जी होगा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी होगा. जितना ज्यादा एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट होगा, ओके, उतना क्या होगा? इंडिविजुअल स्ट्रक्चर के पास एनर्जी कम होते जाएगा. और जितना एनर्जी कम होते गया, लोअरिंग ऑफ एनर्जी होगा, तो उतना क्या होगा? स्टेबिलिटी बढ़ेगा. ऑलराइट, सो दिस इज व्हाट माय डियर फ्रेंड्स द एंटायर कनेक्शन ऑफ resonating structures, resonance energy and stability, and I'm sure you have got it completely. So my dear friends, I will now sum up with the concept of resonance by giving you a couple of examples. The first one is, I talk about a carbonate ion.
Okay, I talk about what? A carbonate ion. It's a molecular ion. Why is it so? Because the formula is CO3 2 minus. Okay, so it's a molecular ion. Reason number one, combination of species. And overall it has a charge. Okay, तो वो molecular ion बन जाता है. तो CO3 2 minus में the constituent species जो elements है दो है, carbon and oxygen. So when you talk about carbon, atomic number is 6, its valence shell configuration is 2s2 and 2p2, so it has got 4 valence electrons. Oxygen is 8, so it is 2s2 and 2p4, तो उसका valence electrons are 6. अब देखिए दोस्तों, ये तो था situation 4 and 6 when carbon and oxygen are what? Neutral. Okay, ground state की बात करते हैं हम. Okay, अभी क्या करना है? Carbon in CO3 2 minus कितना इलेक्ट्रॉन से काउंट करना है? ऑक्सीजन इन CO3 2 माइनस कितना इलेक्ट्रॉन है वो काउंट करना है. एंड अकॉर्डिंगली वी कैन डिसाइड द चार्जेस. ओके, अगर कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन है इन कार्बोनेट आयन देन इट इज गोइंग टू बी व्हाट? यस, न्यूट्रल. सिमिलर फॉर ऑक्सीजन. हाँ, लेकिन अगर एक इलेक्ट्रॉन कम है या एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो चार्ज डेवलप होगा. फॉर एग्जाम्पल, सपोज इफ कार्बन हैज गॉट 3 इलेक्ट्रॉन्स, होना कितना चाहिए था उसके पास? 4. एक कम है तो पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा. ओके, अगर कार्बन के पास 5 इलेक्ट्रॉन है इन अ पर्टिकुलर मॉलिक्यूलर आयन, होना चाहिए 4, तो एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है उसके पास, तो कौन सा चार्ज डेवलप होगा? ओह यस, यू गॉट इट राइट, नेगेटिव. सेम थिंग फॉर ऑक्सीजन. ऑक्सीजन शुड हैव 6 इलेक्ट्रॉन्स फॉर बीइंग न्यूट्रल, लेकिन अगर उसके पास 7 है तो इट विल डेवलप 1 नेगेटिव चार्ज. लेकिन अगर उसके पास 5 है तो इट विल डेवलप अ पॉजिटिव चार्ज. ओके, इलेक्ट्रॉन की कमी पॉजिटिव चार्ज देगी, इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो नेगेटिव चार्ज देगा. ओके, कंसेप्ट इज सिंपल आई गेस. ऑलराइट, सो मैं अभी आपको स्ट्रक्चर दिखाऊंगा. फर्स्ट स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनेट आयन एंड दैट इज So this is, my dear friends, structure number 1 of a carbonate ion. Okay, cross are electrons of carbon, dots are electrons of oxygen. Okay, so now we start with the top oxygen. Count करो dots कितना है? 1, 2, 3, 4. These are lone pair of electrons, and 2 electrons are involved in bonding with carbon. The 4 plus 2 is 6. You get it, 6. So ये top वाला oxygen is neutral. Left oxygen देखो. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 3 लोन पेयर्स और एक सिंगल इलेक्ट्रॉन, मतलब कितना हो गया? 7. ये इलेक्ट्रॉन इज इन्वॉल्व इन बॉन्डिंग विद कार्बन. 7 होना कितना चाहिए था? 6. यानी एक इलेक्ट्रॉन बढ़ गया है. एक इलेक्ट्रॉन बढ़ गया तो कौन सा चार्ज होगा? यस, नेगेटिव चार्ज. राइट ऑक्सीजन देखो, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और यहाँ पर एक सिंगल इलेक्ट्रॉन है जो बॉन्ड में शामिल है कार्बन के साथ. सो 7 इलेक्ट्रॉन. सो वंस अगेन इट गेट्स अ नेगेटिव चार्ज. कार्बन के पास कितना इलेक्ट्रॉन से आजू बाजू में काउंट करो? 4. होना कितना चाहिए था? 4. सो इट्स न्यूट्रल. ऑलराइट, सो देखा आप लोगों ने CO3 when we talk about total there are going to be 4 atoms, 3 oxygen 1 carbon. उसमें से 1 carbon and 1 oxygen are neutral and the remaining 2 oxygen contains 1 negative charge. So overall negative charge कितना हो जाएगा? 2 minus. You getting it? Oh yes, right. अभी next resonating structure क्या मिलेगा? Shift. बॉन्ड शिफ्ट करो. बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो ऑफकोर्स यू कैन शिफ्ट द इलेक्ट्रॉन्स, तो आपको एक और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिल जाएगा एंड दैट इज गोइंग टू बी, अभी डबल बॉन्ड विल कम ऑन द राइट हैंड साइड. ओके, ये यहाँ पे शिफ्ट हो गया, सो सॉरी ऑन द लेफ्ट हैंड साइड. सो अभी द इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट आई विल शो इट टू यू. अभी तो नेक्स्ट वाला तो बहुत ईजी हो जाएगा आप लोगों को समझने के लिए, क्योंकि एक बार एक पर्टिकुलर पार्ट समझ में आ गया तो फिर नेक्स्ट बिकम्स वेरी इजी. अभी आप देख सकते हो कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन है जो पहले भी था. ओके, तो कार्बन इज न्यूट्रल. लेफ्ट ऑक्सीजन नाउ देखो 1, 2, 3, 4 and 5 and 6 इलेक्ट्रॉन, सो न्यूट्रल. राइट वाला ऑक्सीजन देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6 and plus 1 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व इन बॉन्डिंग, सो 7. तो उसके ऊपर एक नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा. ऊपर वाला ऑक्सीजन देखो टॉप वाला 1, 2, 3, 4, 5, 6 and plus 1 electron involved in bonding with carbon. So that means it will have a negative charge.
Alright? इसको एक और बार हम घुमाएंगे ऐसे, like this. So I'll be getting another resonating structure, and that will be now double bond will be on the right hand side. Okay, you can check it out now. फटाफट हो जाएगा, अभी तो आपको समझेगा. This is structure number 2 और ये structure number 3 है. तो the left oxygen 7 electrons है, 1 2 3 4 5 6 and 1 electron is involved in bonding with carbon. Right वाला oxygen 1 2 3 4 and 2 electrons are involved in bonding. So यहाँ पे no charge is neutral, 6 electrons. Carbon neutral, 4 electrons. Top वाला oxygen देखो 1 2 3 4 5 6 and 1 electron forming a bond with carbon. तो आप देख सकते हो it has a negative charge. तो आप देख सकते हो now by means of transfer of bonds and transfer of the position of the electrons, which we talk about resonance, तो आप देख सकते हो the charges will shift. Right? So this is my difference, the three resonating structures of CO3 2 minus. Okay? Now I'll give you another example, and that is about nitric oxide. Formula is NO. Nitrogen atomic number 7, 2s2 to p3, so it has got 5 valence electrons. Oxygen is 8, so 2s2 and 2p4, so it is going to be 6. So now, have a look at this structure now. Nitrogen, 2 electrons are involved in bonding. This 2 lone pair and this is 1. So that means how much? 1 2 3 4 5. कितना इलेक्ट्रॉन्स होना चाहिए नाइट्रोजन के पास? 5. तो ये नाइट्रोजन क्या है अभी? स्टेबल है और वी कैन से न्यूट्रल है. अब ये राइट वाला ऑक्सीजन देखो. ओके, राइट ऑक्सीजन 1 2 3 4 एंड प्लस ये 2 इलेक्ट्रॉन्स विच आर इन्वॉल्व इन बॉन्डिंग, तो टोटल 6. So it's going to be neutral. Alright? Next possibility what we have is अब ऐसा पॉसिबिलिटी है. काउंट द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ नाइट्रोजन 1 2 3 4. होना कितना चाहिए था? 5. यानी एक इलेक्ट्रॉन कम है, सो इट विल हैव अ पॉजिटिव चार्ज. ओके, हैव अ लुक एट दिस ऑक्सीजन नाउ. 1 2 3 4 5 6 7. एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, 6 होना चाहिए था, 7 है, सो इट विल हैव अ नेगेटिव चार्ज. Okay, so this merely by shift of electrons. I will call this as an odd electron molecule क्योंकि total number of electrons in the valence shell is 5 plus 6 is 11. Okay, so it is going to be an odd electron molecule. यहाँ पर आप देख सकते हो, तो यहाँ पर it is going to be even oxygen 6 electrons. So 3 oxygen है, तो 6 3s are 18 and plus 4, that is 22. Okay, and of course we say that there are going to be 2 extra electrons also, so it's 26. So it's a even odd molecule. This is odd electron molecule. Okay, so I hope with this particular examples it's very clear. So this is the entire part, an overview I can say, not in detail. Okay, an overview of what is resonance all about, and I'm sure you have understood this very well. Thank you so much.